जो भाषा आपके लिए आसान है वो भाषा बोल दीजिए CILS में, कोई दिक्कत नहीं। So last time we were together in Belgrade, the world was very different. We've been through an epic pandemic, we are in a major war, and there's also been a global spotlight on restoration and nature-based solutions. So we are in a very different world. And this landscape, this magical landscape, has also continues to change very rapidly. And NCCI, our network, the Network for Conserving India, has also evolved and continues to evolve. You'll hear in the coming days about the collaborations which have developed in NCCI, about the wonderful work that these small grantees are doing in the landscape, about the growing interactions with the researchers and NGOs and the Forest Department. We'll be discussing all of these in the coming days. But from the beginning, from the very beginning, on the Kisli side of Kanha, the first time we were together as a network, the tenet, the basic tenet, is that, and continues to be, that the future of this landscape depends equally on the well-being of its people and a thriving nature. So our theme for this CILS is Jugumandi, is the duality, the interaction, the back and forth, give and take, and ultimately the harmony between people and nature. So we have two themes for this CILS. Today we'll be talking about connectivity, coexistence, and conflict, which has been an issue we've been addressing from the very beginning. And tomorrow we will be focusing on restoration. Restoration defined in a very broad sense. Restoration of forests, of habitat, of ecosystem services, but also of culture and everything that is involved in this landscape, agriculture, agrodiversity, because all of those, culture, agrodiversity, forests, wildlife, it all interacts together. So what do we want to get out of this symposium in the next few days? We want to grow our community, expand our community, share ideas, think creatively together about new approaches to helping this landscape. We want to make new friends, we want to build more collaborations, and we want to have fun. We want to share good food. We want to enjoy this beautiful place. And I welcome you to this symposium. And with that, as you know, the Corbett Foundation is our partner for this symposium. So, Kedar will handle recruitment. Thank you very much, Ruth. You're doing me complex because my English is worse than yours. So I recommend to speak only in English. Again, extending a very warm welcome to all the delegates of CILS 5. It's been such a pleasure to be a part of this right from day one when we started having meetings and brainstorming on how to structure the CILS 5 and what sessions to have and who would be the speakers. It's been a wonderful journey, and thank you, Ruth, Amrita, and Mansi, and everyone at NCCI for giving the Corbett Foundation this opportunity to be a partner and be a part of this wonderful gathering. Dr. Ranjit Singh, who is our main speaker today, and I mean his presence is a blessing for all of us. Interaction with him is going to be a wonderful thing, and very soon the field director of Kanha Tiger Reserve will be here. I look forward to all the interaction, and tomorrow morning I believe there is a free time. I'm somebody who has booked safaris, of course they will enjoy the forest. However, if you have spare time, I will definitely recommend that just next door in the next plot
interact with the people there. Taiga community members are running it, and we are just facilitating it. So it will be a great opportunity for all of you to just have a look there. My colleagues, Dr. Patta, Dikesh, Priya, and Ira, they will be here for any assistance that you would require. If we are doing some couple of projects, community-based conservation projects in this village itself, if you want to just have a look or discuss with my colleagues, they'll be available. And I'm here, again, a warm welcome to all of you, and thank you so much for taking time from your busy schedules, from your universities, organizations to come here and be a part of this gathering. Thank you very much. Now I hand over to Amrita, and Amrita will be sharing the details about the next session. Thank you. Hi everyone. मैं हिंदी इंग्लिश मिक्स करके बोलने वाली हूँ क्योंकि मैं वैसे ही बात करती हूँ। तो थैंक यू सब यहाँ पे आए हैं। मुझे लगता है कि अब NCCI has so many people कि मुझे लगता है कि जब आप होम ग्राउंड पे खेल रहे होते हैं ना वैसा लगता है। पहले नर्वस लगता था, अब नर्वस नहीं लगता है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे हैं मुक्की की साइड पे कान्हा में। तो मुझे थोड़ा सा बात करना था कि हम इस जगह यहाँ जगह में कौन कौन है, क्या काम करते हैं, कैसे मिलते हैं। लक्ष्मी मरावी जो यहाँ की फॉरेस्ट गार्ड है, जिनका मेरा नाम शायद गलत बोला है, वो आज आ नहीं पाए हैं, मगर जो उनको जानते हैं वो जानते हैं कि वो एक फोर्स है, वो बहुत चीज़ें करते हैं। वो यहाँ के रूट सिंह स्कूल में एजुकेशन के तौर पर बहुत एक्टिविटीज़ करते हैं। उनकी हर एक बात में आपको समझ में आएगा कि उनका विजन है कान्हा के लिए। वो चाहती है कि यहाँ के बच्चों को वो लगाव कैसे होना चाहिए और क्या करना चाहिए उसको बनाए रखने के लिए। तो उनका एक वीडियो है, मैं ट्राई करूँगी डालने का, नहीं तो आपके प्रोग्राम्स में वो लिंक है और वो लिंक पे जा सकते हैं। मैं अभी नहीं ट्राई करूँगी क्योंकि अभी कुछ और भी लोग हैं जो यहाँ पे हैं जिनसे हम मिलना चाहते हैं, तो पहले मैं उनको बुलाना चाहता हूँ। तो this part of this session is to situate why we're on the Mukki side and what's the Mukki side's vibe for Kanha. And I would like to call Sally. Hi, good morning everyone. I'm Savini, I'm the founder of PashooPakshee, and we are a craft-based social enterprise that started in 2016. Today I am actually here just to support the artisans of my team, and the spotlight is theirs. But before I hand it over to them, I'm just going to introduce who we are and what we have been doing in the last 6 years in the Central India landscape. So in 2016, we started with a very simple idea of making socially and environmentally responsible souvenirs that would cater to wildlife and ecotourism destinations in India. As of today, we have 5 craft centers which have been built on very strong collaborations and partnerships with non-profits of that region. Out of these 5, 4 of them are in Central India. My first center started in Pench in 2016. It's 6 years old and it is supported by an NGO called the Conservation Trust. The second center is within this very property, and if you want to have a look at it, it's exactly where Kedar said, it's right next to the museum. So if you have the time, please go and walk into the center, and is of course supported by the Corbett Foundation. The third and the fourth center has been supported by the Madhya Pradesh Tourism Board, and it is in Panna. And the fifth center is in Mumbai, and we call it our backup center. It's a very small center of just 8 women, and we usually run it, when there are seasonal work over here, like Monga collection, then the Patta collection, and when the centers here don't work, the work goes to the center in Mumbai. So that's about my centers. And we have a mantra. It's called design, train, and sustain. So coming to design, all the products that you see are designed in-house and sampled in-house in our head office in Mumbai. All the designs we do are extremely thoughtful, and they portray the landscape and the identity of the area. So for example, in Kanha, we would make small curios which show the beautiful blue houses. We depict products, we depict maua, we depict palash on the products. So all of them always portray the destination where the products are being sold. And we also try to create wildlife awareness and biodiversity through our products. So as of today, we portray about 200 different species
across our products, right from insects, birds, marine wildlife, all of that included in all our products. We visit all our centers at least twice a year, and we provide complete hand-holding for the entire center. We train them on making the new products that we've developed, refresher trainings on the old products. We also give them soft skill training, how to do a little bit of bookkeeping, how to handle raw material and inventory, getting in the raw material, taking out the finished goods, how to write their own challans, how to calculate their own stipends, so at the end of the month they know what is it that they're going to earn. So all these kind of trainings we do twice every year. My team visits all the different centers, different times of the month. Like the last training center session we had over here was in the month of December, and we probably will be visiting again sometime in April for the next training. We also make sure that the right kind of raw material reaches them, and obviously create market linkages, which brings us to our third mantra, sustain. So in sustain, we actually have two ways of looking at it. One is environmental sustainability, and that is where I will talk about this. I'm assuming everybody got this in their rooms. I noticed some people have not noticed it, but it is somewhere near your lamp post. So these are machine washable coasters that have been made by the artisans of Kanha. If you see, the outer coating is actually a polyester fabric so that it doesn't catch stain. Behind is actually 100% cotton, and inside, if you actually cut through, are layers of t-shirt yarn, t-shirt material, the off-trims that get produced in the garment manufacturing area. So what we actually do is every single product, we try to use some kind of circular economy over there. For example, all the bags that we make are lined by garment fence that actually come out from Booty Bori's textile factories. So that is our sustain angle for the design. But also sustain means making sure that they get a sustained income continuously every month. So as of today, we have 80 points of sale all across the country. We sell right from Jim Corbett, Bharatpur, Kabini, Periyar, all these national parks. All the products go from all of these 5 craft centers that we work with. And we also have a very well functioning website that you can all check out, and we ship worldwide. So that's it from me, and I'm going to hand over the mic to Vandana Chaudhary and Satya Patel. Please stand. सर हम लोग पहले खेती का काम करते थे सर, अपने घरों पे करते थे, घर में है, बाड़ी है, सब्जी भाजी जो कुछ भी हम सब लगाते थे सर। उसके बाद फिर मैम लोग आए पशु पक्षी से और हमको बोले कि यहाँ पे सिलाई करना है, कुछ काम करना है आप लोगों को, तो आप लोगों को कैसा लगेगा? तो हमने बोले हमको बहुत अच्छा लगेगा, हमको काम मिल रहा है, छोटे छोटे काम है, कुटीर उद्योग कहना चाहिए इसको। तो इससे हमारे यानी कि क्या, इससे हमें 1-2 रुपये यानी कि अपने घर के खर्च के लिए हमको हो जाता है सर। तो अभी खेती का काम कौन कर रहा है? खेती के काम भी करते हैं सर। हाँ सर, खेती के काम के लिए हम लोग छुट्टी ले लिया करते हैं 1 महीने के लिए। जैसे बरसात के समय, जून जुलाई के समय सर, हम लोग 1 महीने के लिए छुट्टी ले लेते हैं। उसके बाद फिर अभी अप्रैल मई की तरफ छुट्टी लेंगे सर। गेहूँ काटना है हमको, तो उसके लिए 1 महीने के लिए फिर छुट्टी लेंगे सर। आप सब सेंटर कैसे आते हो? पास में ही सर, पास में ही है मैम हमारा गाँव, इधर सारे टोल है और बहरा खाल 2 गाँव से आते हैं हम लोग। यहाँ पे सब लोग मिलजुल कर काम करते हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे काम करते। अगर आप लोगों को हम सबको कुछ बोलना होगा कि सेंटर आए देखें या गाँव आए देखें, तो आके देख सकते हैं? हाँ सर, हाँ मैम, आप लोग सभी लोग आप हमको सिखा दोगे पोस्टर बनाना? हाँ मैम, सिखा देंगे। और इससे जो आपको अतिरिक्त आय होती है? हाँ सर, वो घर खर्च में हम लोग बच्चों को, मेरे बच्चे हैं सर, तो हम लोग बच्चे की पढ़ाई में करते हैं सर। आपके साथ कुल कितने लोग काम करते हैं? हम लोग पहले 15 थे सर, अभी फिर 5 कम हो गए हैं, तो अभी 10 हैं सर। क्यों कम हो गया? सर कोई परेशानी होने लगी कि नहीं, घर में परेशानी होने लगी, किसी के यहाँ कोई एक्सपायर हो गया सर, तो उस वजह से कम हो गया सर यहाँ। तो अगर नए लोग आपका टीम ज्वाइन करना चाहेंगे तो? हाँ सर, हम लोग जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं सर, और 1-2 लोग और तैयार हो रहे हैं। तो हम लोग सोच रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे काम करें, उनकी आमदनी बढ़े। शुरू में कितने प्रोडक्ट बनाते थे और अभी कितने प्रोडक्ट बनाते हैं आप? शुरू में सर हम लोग फर्स्ट में तो मिनिएचर किचन जो है वही बनाते थे सर, और उसके बाद फिर पोस्टर बनाए, बैग्स बनाए, अभी टॉयज बना रहे हैं सर। अभी कई प्रकार के बैग, मैसेंजर बैग हैं,
तुझे करना So everyone here, you go check out their stuff in the CILS Heart. We have the heart for both the days. आप दोनों दिन जाके देख सकते हो कि क्या क्या बना सकते हो, चले जा सकते हो. Somebody, do you want to talk about the workshop? Okay, so actually from last tourists can actually come up there and go to a list of workshops where the women actually teach them how to make keychains, how to make an entire wildlife creative. So a little bit of that is what we are also going to be doing here in the evening, both today as well as tomorrow. And I would definitely be very happy because I think within the museum and as well as the center, because you can actually see how they make records and how we can implement that. A lot of that work is something that we used to do with the NCCI that over there. And also Amrita is extremely modest in how she started earn. But we have a particular procedure on how we select community artisans. Most of the artisans we work with have an annual family income of somewhere around about 1 lakh to 1,00,000 a year, and our family is actually 4. So if we can't have the center, this is actually one of my favorite centers, and out of the 10 women, 6 of them are actually double the family income significantly. So that is कार्बेट फाउंडेशन और पशु पक्षी ने मिलकर यह 2018 में शुरू किया था सिलाई सेंटर का काम. हमारे क्राफ्ट सेंटर को चालू किया था और यहाँ हम 2 गांव की महिला काम करते हैं. सारसोल और बैराखा. पशु पक्षी ने हमें 3-6 महीने में ट्रेनिंग दे जाते हैं और सामान भी देते हैं, जिससे हम अपना सामान बनाकर पशु पक्षी को दे देते हैं और हमें इसकी पेमेंट हमारे सीधे खाते में आती है और हम इससे पैसे निकाल के अपने घर खर्च में चला सकते हैं. पशु पक्षी ने हमें जंगल से जोड़ा है जहाँ कान्हा के प्रसिद्ध जानवर पशु पक्षी होते हैं. इसके अलावा हम सिलाई भी करते हैं, जैसे बफ, टाइगर, लेपर्ड, टॉयज, बैग आदि बनाते हैं. बैग. अरे वाह, अगली बार CILS के लिए बैग. In your so many years of working, and I'm a big fan of PashooPakshee. I have been following your work for last 4-5 years, and I've been to your centers. And I know that you have a full chain of activities going on, and there is a lot of effort in that. My question is that what sort of social difference you see because of this in the position of women in the society? So, for example, even them, initially they are very skeptical as to how much money they are going to be earning. It's with the few hours that they are managing to give, because obviously they have so many other things to handle at home as well. And that is where we struggle the most as well when we are starting a new center. Simply because in the first year, they will probably not even be able to only earn 1,000 rupees a month, since they make so many mistakes. And it's a learning curve, just like how we all go to college. It takes time for a certain kind of quality to come out of them and a certain kind of speed
मेरा काम है कोन पेंटिंग का काम, जो हमारे कोन कला जो है एक आदिवासी पारंपरिक कल्चर, उस पर आधारित जो इस पारंपरिक चीज को जो है हम पेंटिंग में बनाकर और हम लोग उसको दिखाया जाता है। जो हमारी संस्कृति है जो लुप्त होते जा रहे हैं, जो हमारी इस जंगल जमीन जानवर जीवन, ये सारी चीज हम लोग जो है उस चीज को दिखाया जाता है। हमारी आदिवासी की जो भी कला है, आदिवासी जो कार्यक्रम है होता है, संस्कृति जो पुराने जो गुजर चुके बीत चुके, उस चीज को अभी देखने को नहीं मिलता है। ऐसी चीजों को जो हम लोग जो है उस पेंटिंग के माध्यम से हम दिखाया जाता है और बनाकर हम बाहर तक ले जाते हैं। ऐसा हमारा काम है। और मैं तो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं 10वीं क्लास तक पढ़ा है, वो भी बड़ी मुश्किल से। मतलब मैं तो मेरे पापा जी तो नहीं है, एक्सपायर हो गए। तो मैं जब 5वीं क्लास पढ़ रहा था उस समय से, तो मैं उसके जाने के बाद मेरा घर गृहस्थी देखना पड़ा, खेती का काम करने वाला कोई नहीं और सब फैमिली तो है, लेकिन सब अलग अलग हो जाने के बाद अपना सब देखना पड़ता है। इसलिए मैं खेती का भी काम किया और अभी भी कर रहा हूँ, बट अब पेंटिंग में जुड़ गया हूँ। थोड़ा सा खेती में कम टाइम मिल रहा है, इसलिए इधर उधर जाना पड़ता है, तो बाहर खास कर रहना पड़ता है। मैं और सबसे पहले तो मैं मानसी मैडम की बहुत शुक्रगुजार करता हूँ, जो आज आप सब लोगों के बीच मुझे आने का एक मौका मिला, आप लोगों से जुड़ने के सहयोग रहा। जो पेंटिंग बनाने के लिए मानसी मैडम ने बोला, मैंने उसके लिए रात में काम किया। दिन में मैंने 10 बजे से 6 बजे तक मैं अपना काम करता था वहाँ पेंटिंग का काम, जो पुणे में कपड़े में साड़ी और सूट उसमें गोंड आर्ट का काम करता हूँ। और मेरे साथ भी और भी आदमी मेरे फैमिली से, तो उनको लेके या उनको छोड़ के मैंने मानसी मैडम ने बोला कि आपको आना ही पड़ेगा। तो मैं 13 को जो है वहाँ से निकला और 14 को मैंने गाँव पहुँचे जोधपुर, रात में पहुँचा वहाँ से। कल ही मैंने बाइक उठाया और सीधे आप लोगों के बीच पहुँचा। इसलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। This is in the program as well. आपके बुकलेट में भी है एक पन्ने पे, बट ऑब्वियसली ऐसे देखने में कई गुना बेहतर है। इसके लिए तो बनाने के लिए तो बहुत सोचना भी पड़ता है और बहुत तो दी है बनाने के लिए, लेकिन उसको कैसे उकेरना है। तो मैडम ने बोला जुगलबंदी के नाम से, तो जुगलबंदी के नाम से मैंने जो पेंटिंग बनाया है, तो मैंने इस परंपरा और कल्चर और हमारी संस्कृति, जंगल, ये सारी चीज को मैंने उसको जोड़ा है और एक दूसरे से जोड़कर उसको बनाया है। मतलब जुगलबंदी मतलब जोड़ा, एक जोड़ने का। हम जैसे वो हिरन जो बनाया है, तो अकेले हिरन तो नहीं रह सकते, उसके लिए साथी चाहिए, अकेले जिंदगी कैसे गुजर सकते हैं। तो मैंने उसको हिरन फ्रंट पेज में जो दिखाया है, तो एक 12 सिंगे के रूप में मैंने दिखाया है और जंगल से भी उसको जोड़ा गया है। जो उसकी 12 सिंगा जो होता है, उसको मैंने पेड़ का आकार बनाया है, जो जंगल को और उस जो है उसके साथ हमारी कल्चर आदिवासी जो है, उसमें आदिवासी भी है, हमारी संस्कृति भी, मतलब सैलांगय, मतलब हमारी संस्कृति की जो भी कला है उसको भी मैंने दिखाया। और पेड़ पौधे, पत्ते और हमारे जो बीच में जो एक पाना है, जो उसकी 12 सिंगे को जो पेड़ जो बनाया है मैंने, एक उस साजा की पेड़ है जो हमारी आदिवासी की बड़ा देव के नाम से उसमें वास करता है और बड़ा देव ही हमारे इष्ट देवता है आदिवासी की, और हम लोग उसको पूजते हैं, पूजा करते हैं और हमारी रक्षा वही करता है। और हमारी हर चीज को रक्षा करने के लिए उसी को हम लोग कहीं भी जाते हैं तो बड़ा देव के नाम लेके भी जाते हैं और उसका सुमरण भी करते हैं सारी चीज। तो उसको हमने जोड़ा है उसमें
उसमें बड़ा देव का वास रहता है, जो साझा पेड़ होता है उसमें, तो उसको मैंने जोड़ा है। और भी वाद्य यंत्र है जो आज भी जो है कुछ भी कार्यक्रम होता है सांस्कृतिक, तो वाद्य उसके साथ एक जरूरी है वो, तो हमने सब चीज जोड़ा है उसमें। और घर भी बनाया है, और दो नगाड़े जो होते हैं, जैसे जन्म और कर्म जो इंसान का जो होता है, जैसे एक इंसान जो है दूसरे इंसान जब उसका रिश्ता जुड़ता है तो उस समय शादी जैसे होता है, तो शादी होता है तो हमारे आदिवासी में नगाड़ा लगाया जाता है, तो उसकी शादी का जो कार्यक्रम होता है तो उसमें नगाड़ा जो है उसका मेन महत्व लगा। और जब इंसान जब इस दुनिया से गुजरता है अंत में, तो उसी नगाड़ा से जो है उस मिट्टी का जो अंतिम संस्कार होता है, तो जब उस मिट्टी को उठाते हैं तो उस बाजा के साथ उस नगाड़ा को ही लगाते हैं। और जैसी परंपरा उसी परंपरा के अनुसार जो है उस कार्यक्रम को किया जाता है, वहीं जो है उसका जीवन जो है अंत हो जाता है। तो वो नगाड़ा जो है शुरू और अंत तक हमारा नगाड़ा एक वाद्य है जो हमारी पारंपरिक को दर्शाता है। ये पेंटिंग पहले भित्ति चित्र के नाम से जाने जाते थे, और इसको जो है दीवारों में पहले गेरू मिट्टी, गोबर और ये जो नेचुरल कलर है, चूही मिट्टी, गेरू मिट्टी, पीली मिट्टी, इन चीजों से जो है हमारे मिट्टी के घरों जो होते थे, तो उसमें आंगनों में एक घेरा बनाते थे, पुताई करते हैं पहले, तो उसमें डिजाइन बनाते हैं। डिजाइन मतलब इसको आज कैसा, जैसे त्योहार हो गया तो उसमें अपने अपने हिसाब से आज इसको ढीरा को ऐसा मैं अपने तरीके से मैं बनाऊंगा, तो वो वहीं से एक शुरुआत जो है हमारी गोंड कला की शुरुआत हुआ है। और आज जो है वो पेपर कैनवास में जो है उसको बनाया जाता है, जो अब नेचुरल कलर तो बनाने में मुश्किल जाता है, इसलिए जो मार्केट से जो कलर आता है फैब्रिक के एक्रिलिक, उसी कलर से हम लोग काम करते हैं। और इस पेंटिंग की शुरुआत जो है हमारे मध्य प्रदेश में गोंड कला की शुरुआत हमारे गांव से ही हुआ है, जो आज देश और विदेशों तक जो इस कला का नाम है और जाफिया है, और हमारे गांव से ही पद्मश्री अवार्ड भी मिल चुका है। और इस कला की शुरुआत जो देश विदेश तक ले जाने का श्रेय जो है स्वर्गीय जनगण से श्याम, वो आज नहीं है, लेकिन उसके पीछे आज हमारा गांव पूरा फैमिली कर रहा है, पूरा गांव कर रहा है, और देश विदेश तक जा रहा है इस पेंटिंग को देखने। और हर घर में आपको कलाकार मिलेगा पाटनगढ़। आप जब भी जाए जबलपुर से अमरगढ़, तो आपको पाटनगढ़ मिलेगा, जो गोंड कला के नाम से फेमस है। और रोड भी है, मेन रोड भी, आप अमरगढ़ तक जाएंगे तो पाटनगढ़ जरूर जाइए। हमारी एक भवन है, कला भवन, जो हमारी आर्ट है, ऐसे ही हाल है, वहाँ पे हमारी एक समिति है, सब बना चुका है, और हम लोग वहीं काम करते हैं अपने अपने इंडिविजुअल घरों में। और इंडिविजुअल घर में काम करके हम लोग एग्जीबिशन बाहर ले जाते हैं। इसी तरह हम क्राफ्ट म्यूजियम में गए तो मानसी मिला, तो वहीं से आज शुरुआत हुआ था, और आज बहुत दिन के बाद जो है मुलाकात हुआ, तो ऐसा लगा है कि बहुत अच्छा लगा मुझे